हेलो, नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेडेक्स के एक और सीरीज में, एक और एपिसोड में, जहाँ पे फिर से हमारे साथ सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन डॉक्टर प्रतिभा नारायण जी जुड़े हैं। मैडम का बहुत ही प्रसिद्ध 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 प्रैक्टिस चलता है ये हैदराबाद में। मैडम 9M हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं, ये घाची बोली जगह पे, राइट मैम? मैं तो हैदराबाद से नहीं हूँ, तो इसलिए थोड़ा मेरे उच्चारण को आप माफ कीजिएगा। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे। थोड़ा टैबू टॉपिक है, लेकिन टैबू से टैबू हटाकर कंसर्न के ऊपर जो नजरिया लाने की जरूरत है, जिस चीज पे हमारा ध्यान देने की जरूरत है, उसके ऊपर पूरा ध्यान देना ही हमारा काम है। इसीलिए हम मेडेक्स में मिलते हैं। सो आज का टैबू टॉपिक है मेनार्की, यानी कि पीरियड्स जल्दी हो जाना या पीरियड्स का शुरू होना। ओके, तो मैडम, थैंक यू सो मच कि आज आप फिर से हमें टाइम दे रहे हैं। थैंक यू टू द शो। बहुत ही जल्दी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में जानना चाहते हैं और कोई इस बारे में ठीक से बात नहीं कर रहा है। क्या ये सच है कि आज के समय में लड़कियों को, बच्चियों को बहुत ही कम उम्र में मेनार्की हो जाती है, या बहुत कम उम्र में उनके पीरियड्स शुरू हो जाते हैं? Namaskar. Thank you so much, Dr. Mayurika, for having me in this program. It is a privilege and honor to be back with you. What exactly is menarche? It's a very important topic, and I agree that it's a very sensitive topic. Now, menarche या puberty या adolescence, ये बहुत ज़्यादा interchange होकर ये शब्द एक दूसरे के लिए यूज किया जाता है. Puberty is the time where a young girl enters womanhood, and it's a gradual process over several years. Now, usually जो एक young girl का growth होता है, it begins in several stages. So, traditionally, हमारा जो गर्ल्स के लिए जो एज डिफाइंड है, द बिगिनिंग ऑफ these pubertal changes are roughly at around 8 years for girls and 9 years for boys. So there are 3-4 stages in which development happens. सबसे पहला स्टेज होता है कि गर्ल्स का सडनली बहुत ज्यादा हाइट इंक्रीज होता है. Then comes the breast budding or breast development, जिसको हम थिलार्की बोलते हैं. उसके बाद में axillary and pubic hair develop होता है, जिसको हम एड्रेनार्की बोलते हैं. Finally comes menarche, या फिर the first time the periods are starting for a girl. Now ये जो menarche का समय है, ये बहुत ही crucial है. And बेसिकली जो हम लोगों ने आजकल नोटिस किया है कि ट्रेडिशनली लाइक मिड 19th सेंचुरी में जो पीरियड स्टार्ट होने का समय था, वो 16 से 17 साल हुआ करता था, विच हैज कम डाउन टू अबाउट 13 years by mid 20th century. Now, the age of menarche at this point is roughly between 9 to 15 years, and an average is 12 years. Now, ये जो change आया है, बहुत हद तक this change is basically because of lot of lifestyle changes that we go through. बहुत सारी nutritional changes हो रहे हैं, inactivity बढ़ रही है. There's a completely people, girls, they are all practically not entering into sports activities or physical activities or exercises which would give them the right sense of जिसकी वजह से जो growing age में जो भी हम लोगों को muscular development और fat deposition कम करने के लिए जो exercises होते हैं, वो कहीं ना कहीं कम हो गए हैं.
जी, कोविड में भी कितने सारे बच्चों को घर रहना पड़ा होगा। इसका भी तो कितना बुरा असर पड़ा होगा उनके हार्मोन्स पे, उनके शरीर पे। एग्जैक्टली। सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, इन इंडिया जो हम लोग मिनार्क के बारे में बोलते हैं, 1955 में रफली दिस एवरेज एज ऑफ मिनार्क वाज 14 years, जो कि आज पर decade it's reducing by a month. So that's an alarming state of affairs. It is alarming because ये जो early menarche है, it is associated with lot of health issues for the girls, and इसलिए इसको address करना बहुत जरूरी है. Also इसका जो अर्ली मेनार्क का जो हम लोग पैटर्न देखते थे, वो हम यूजुअली डेवलप्ड नेशंस में ज्यादा देखते थे. लेकिन अब हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज में भी ये देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी न्यूट्रिशन चेंज हो गया है, एंड ऑल दिस हैज अफेक्टेड द इंसिडेंस ऑफ अर्ली मेनार्क. So roughly in any population, we see 1 in 5,000 to 1 in 10,000, और वो भी हम girls में early puberty ज्यादा देखते हैं, with a ratio of girls and boys 10:1. मतलब early menarche और early pubertal changes, और जिसको precocious puberty बोलते हैं, as compared to boys, girls में ज्यादा दिखाई देता है. इसका कोई स्पेसिफिक रीजन तो नहीं है, बट probably the way a female's body is responding to the external sources of hormones, genetic sources, environmental sources, ये उस पर डिपेंड करता है. क्या इससे मदर्स को, पेरेंट्स को डरना चाहिए? इसमें कंसर्न वाली बात क्या है? इसमें बहुत सारे कंसर्न्स हैं, and it is actually an indicator कि future health issues होंगे. So जो छोटी चीजें हैं वो इस प्रकार की हैं कि पर्टिकुलर गर्ल जिसका एज जल्दी एज में पीरियड स्टार्ट हुए हैं, इवेंचुअली उसका फ्यूचर हाइट कम रह जाता है. दे डोंट ग्रो वेरी टॉल, दे स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ पीरियड्स. मैक्सिमम उनकी ग्रोथ 2 साल के लिए होती है, उसके बाद नहीं होती है. There are lot of social and emotional changes which the girl goes through, because जो चीज 12, 13, 14 साल में होनी चाहिए, that is happening to a very young, बहुत मासूम सी एज है वो, जहाँ पे 7, 8, 9 साल में ये चेंजेस हो रहे हैं. The girl is not even mentally matured to handle the periods. इसके अलावा lot of नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हम बोलते हैं मेडिसिन में, जिसमें द लेडी इज प्रोन टू एंडोमेट्रियोसिस, मे हैव इनफर्टिलिटी इश्यूज, हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर्स, जो कि ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर और कोलन कैंसर होते हैं. इनकी इंसिडेंस बढ़ जाती है. लॉट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस दे आर प्रोन टू. Type 2 diabetes they are prone to, and also there are a lot of metabolic syndrome and obesity that we see in these girls as they are growing, coming to the middle age and old age. इसके अलावा जो हम नोटिस करते हैं कि ये जो पीरियड्स जल्दी आना होता है, कहीं ना कहीं ये हमारी पूरी सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है, and it has become globally a big public health concern because it affects a woman's health. And इसको सही तरीके से एड्रेस हम तब कर पाएंगे जब हम ऐसे एफर्ट्स करेंगे जिससे कि ये जो एज ऑफ मेनार्क है ये हम लोग कम ना होने दें. One of the very important things that we can keep in mind, देखिए हम जेनेटिक्स को चेंज नहीं कर सकते हैं. वी कैनॉट चेंज आवर एथनिक ओरिजिन. वी कैन टू एन एक्सटेंट चेंज द एनवायरनमेंट,
हमारे जो एक्सपोजर्स हैं, हमारे जो क्रीम्स एंड डेयरीज जो हम यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं. We can encourage our girls to play a lot, at that age, instead of keeping them homebound, encourage them for outdoor activities. Alawa iske, we can actually prevent exposures to some of the poultries and dairies which are being injected with steroidal hormones. These are the external sources of hormones which might be causing prepubertal changes in women and making them exposed to the sex hormones which cause early puberty in these girls. So this is concerning. So as I really want to know कि अगर ऐसा सिचुएशन है कि ये सच में कंसर्निंग है, तो पेरेंट्स क्या करे ताकि ये या तो इसको अवॉइड कर सके, और अगर ऐसा हो गया तो फिर उसके बाद पेरेंट्स क्या करे? आपने एक 2-3 चीजें तो बताई कि हम हमारे डाइट के बारे में ध्यान दें, तो प्लीज इस डाइट वाली बात पे थोड़ा और डिटेल्स में बताएंगे, क्योंकि लोगों को हमेशा ये फील होता है कि भाई पोल्ट्री में इतना ज्यादा प्रोटीन है, यू मस्ट गो फॉर पोल्ट्री, एंड दूध दूध तो बहुत जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, उसके बगैर बच्चा बड़ा कैसे होगा? मतलब आप तो गायनेकोलॉजिस्ट है, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, और मेरे पास ऐसे मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ आते हैं जिनके बीच में लड़ाई हो जाती है, घमासान लड़ाई हो जाती है अगर बच्चे को मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स नहीं दिए जा रहे हैं तो मदर इन लॉ को लगता है ये डॉटर इन लॉ अपने बच्चे को डेवलप ही नहीं होने देना चाहती, और मदर लेटेस्ट रिसर्च पढ़ के कुछ नया करना चाहती है, नॉन डेयरी नॉन पोल्ट्री डाइट डिजाइन करना चाहती है अपने बच्चे के लिए. सो व्हाट इज इट, जरा इसके ऊपर थोड़ा साइंटिफिक रोशनी डाल दीजिए. डॉक्टर मयूरिका वेरी राइटली सेड, हम लोगों का एक्चुअली एक ऑब्सेशन है कि मिल्क विल हेल्प ग्रोइंग बोन्स. भले ही वो प्रेगनेंसी हो, वो यंग एज हो, it is something which is a very important and crucial part of our diet, of our staple diet. Unfortunately, मैं अपने पेशेंट्स को भी जब प्रेग्नेंट लेडीज को समझाने की कोशिश करती हूँ कि मिल्क इज नॉट द आइडियल फूड. It causes so many problems like diabetes in pregnancy, like obesity. Similarly, ये जो मिल्क है, मिल्क ट्रेडिशनली हमारे आयुर्वेद में भी मिल्क को वो कंडेम किया गया है. वो इसलिए किया गया है बिकॉज आयुर्वेदा के हिसाब से जो गाय का दूध है वो गाय के बछड़े के लिए है, वो इंसान के बच्चों के लिए नहीं है. द रीजन इज दैट जो ग्रोथ फैक्टर्स, जो ग्रोथ हॉर्मोन्स हमें एक बड़े एनिमल के बच्चे के लिए चाहिए होते हैं, वो हम इंसान के बच्चे को दे रहे हैं सेम प्रोपोर्शन में, which will obviously cause many types of developmental issues in humans. इसके अलावा there's one more very important thing. बाकी animal species in the animal kingdom, they are dependent on their mother's milk only till their infancy. लेकिन human beings में जो माँ का दूध होता है, ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है, वो तो चलती है 6 महीने से 1 साल, 1.5 साल, whatever. लेकिन उसके बियॉन्ड हमारा जो मिल्क का ऑब्सेशन है वो खत्म नहीं होता है. We switch over to, initially a whole milk, and after 2 years we switch over to low fat milk. This has been the nutrition which is prescribed globally. प्रॉब्लम क्या है मिल्क लेने में? आई अग्री, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ फैट, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, गुड सोर्स ऑफ ग्लूकोज एंड शुगर्स. अलावा इसके देयर आर लॉट ऑफ अदर growth factors, there are a lot of growth hormones, leptin, insulin like growth factor 1, which are, they are required for growth, but in excess quantity, they are causing situations of obesity, overnourishment,
and hormonal changes, because they are also having sex steroid hormones, which are affecting the pubertal development of both boys and girls. And it is understood that there are a lot of studies that have been done in which we have found out that milk as a source of protein तो है, उसमें insulin like growth factors होते हैं, लेकिन दूसरे मीट या अदर पोल्ट्रीज उसमें भी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स पाए जाते हैं, लेकिन उतने ज्यादा नहीं जितना मिल्क में होता है. तो ऑब्वियसली मिल्क में देयर आर सम अदर फैक्टर्स which are increasing the IGF-1, which may adversely affect the growth and development of the young girls and boys. We have to very importantly understand कि जब हम दूध लेते हैं वो प्योर मिल्क के फॉर्म में नहीं होता. It is consumed with sugar, it is consumed with other protein preparations, it is given as not just milk form, it is given as ice creams, it is given as sweets, as desserts, you name it, and you have countless milk products which could be adversely affecting the early child development and growth. So it becomes very, very important that this nutrition needs to be controlled. When I talk about young girls, it is very important that we plan the girls' development, जिसको हम बोलते हैं बालावस्था. Can we really plan the children's development? So, हमें सबसे पहले तो ये मिल्क का जो ऑब्सेशन है ये कम करना पड़ेगा, एंड ये समझना पड़ेगा कि दिस मिल्क इज द बेसिस for so many future health concerns for the girl. So what we are doing today, we are not really helping her grow big and nice and healthy, but we are inviting future troubles in her health, which can have implications in her well-being for tomorrow. So why not plan this बालावस्था को हमको एक प्रकार से कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि हम बच्चियों का वेट पुट ऑन प्रिवेंट करें. दिस इज द टाइम, बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस एंड बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ स्पर्ट, उनके डिमांड्स बढ़ते हैं. बट उन डिमांड्स को कंट्रोल करने के लिए वी कैन गिव द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड अ बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन than depend on only milk and dairies. This is the time, as I mentioned, that they may undergo a lot of social and emotional changes. We can control all of this by helping them manage their stresses. So stress management becomes another important aspect of their eventual development. Encouraging outdoor activities, exercising, giving them feel-good hormones will definitely help them come out stronger, not just physically, but also mentally. And of course, we have to ensure that overall balanced nutrition diya jaye unko, which helps them have the right proportion of carbs, proteins, and fats, and give them, our girls are mostly anemic. They don't require carbs. They don't require to eat only rice. Why not build up their hemoglobin levels, build up their iron and ferritin levels by encouraging a lot of green leafy vegetables, give them sources of nutrition apart from what a non-vegetarian food is giving. I'm not saying that go vegan, but I'm trying to tell you that respecting your dietary habits, Balance options, and give the girl a balanced food, which will help in an overall good growth and development of all our young girls and boys. Wow, this really has been quite eye-opening and assuring. And मुझे पता है कि इस वक्त बहुत सारे अभिभावक पेरेंट्स होंगे जो बच्चियों के पेरेंट्स हैं
जो कंसर्न है, जिनके घर पे छोटी बच्ची है या टीनेजर बच्ची है, अब उनको समझ में आ रहा होगा कि मेनार्क क्यों इतने जल्दी हो गया, क्या गलती रह गई, अब करेक्टिव मेजर में क्या कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी बात कि आपने बोल रहे कि कंप्लीटली वीगन वीगन हो जाओ, लेकिन कहीं पे तो बैलेंस लाओ। मतलब दूध भी पी रहे हैं, आइसक्रीम भी है, रसमलाई भी है, खीर भी है, सब सब कुछ अगर एक साथ होगा तो दिक्कत तो आने वाली ही है। करने का तरीका ये नहीं होना चाहिए कि we flood them with chocolates and ice creams. You know, please shower them with all your time, attention, love, and help them understand that nutrition, having a balanced nutrition, right proportions, right foods will help them, survive adulthood and old age without any chronic diseases like hypertension, like diabetes, so many lifestyle disorders. Like in girls, we see polycystic ovarian syndrome. The incidence has become so common these days. And all this could be encouraged. We can reduce the incidence by helping our small children understand the need for good nutrition. बिल्कुल बिल्कुल, I completely agree with you. Parents can right now work towards raising their children to have ग्रेट डाइटरी हैबिट्स। मतलब अभी से अगर खाने पीने की आदत को सही कर देंगे तो आपके बच्चे असल में लंबा जिएंगे, ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, अपने जीवन काल में ज्यादा खुश रहेंगे। और कई सारे पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते थे, अभी पालक में अगर पनीर नहीं डाले तो क्या डाले, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए व्यूअर्स को एफएफडी का चैनल सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल पे जो रेसिपी वीडियोस है वो आपको देखते रहना है। हमारे रेसिपी वीडियोस में आपको एक से बढ़कर एक बढ़िया वीगन रेसिपीज मिलेंगी। इसी चैनल को देखते रहिए। यहाँ ये आपके हेल्थ के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। सो एफएफडी का जो वीडियो आपको हर वीकली आ रहा है वो आपको देखते जाना है। आपको बेस्ट एक्सपर्ट्स से मुलाकात करने का मौका मिलेगा। You're going to learn about real science and you're going to get the real solutions. Thank you so much, Dr. Pratibha. Again, it's been a great pleasure interacting with you. Again, you have, flooded us with true light. Okay, आपने हमको सही रोशनी दिखा दी. Thank you very much, everybody. Stay tuned, subscribe to the channel, like this video and share this video. Thank you so much for your valuable time.